Good afternoon, sir. Are you there? Yes, I am. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'm trying to share my screen. I believe you have to disable the participation screen. Okay. Okay. So I hope So you now can. it's visible. Okay. Thank you very much. So good afternoon, everyone. How many students? Okay. So how many students we have, ma'am, here? Around 10 to 15, I believe. Hello. Good Sir? afternoon, students. Yes. Okay. So I'm asking how many students we have here. So we had 24 students with us. Okay, great. I believe they are all from School of Humanities. Yes, sir. Thank you. So, good afternoon, students. My name is Govind Yadav, and I hope you are seeing my screen. So, today we are going to have a wonderful and amazing session on designing thinking as a strategy of innovation. So, before I begin, I wanted to have a brief, description about myself. So, I hope my screen is visible to you all. So, yes, so I'm a Yes, rocket. sir. Yeah, so I'm a rocket engineer and I am running my own company called Vyomika Space. We are working on various aspects of space industry, right from manufacturing to space education in institutions. And just a glimpse about our work. So we are working with ISRO under a national MOU agreement on space education, which allows us at Vyomika Space to get in touch with students just like you and talk about the things which is happening in Indian space industry. And after that, just a mere glimpse of my key achievements that I had from this industry from last 10 years. So I worked as a rocket engineer. I developed a cube satellite, which was a student cube satellite, won more than 42 global academic awards, and NCRT awarded me as a National Space Education Educator Award in 2018 in Jaipur, and been there for more than 520 space outreach programs for multiple institutions and academic platforms. And recently I have opened India's first space rural space lab in Uttar Pradesh, and we are in a process of establishing country's first open center for space research. Preferably we are looking at a site in Punjab only. So, like this is the ground level work we are trying to do. We recently created a entire space school in Uttar Pradesh, and for this work, I got awarded by Srimati Anandiben Patel, who is the governor of Uttar Pradesh and two-time chief minister of Uttar Pradesh. Gujarat. And recently, I have taken students to Space Application Center, Gujarat. How many of you have seen the movie Mission Mangal? Students, how many of you have seen the movie Mission Mangal? देखा है किसी ने? अक्षय कुमार स्टार और मिशन मंगल मूवी, वो जिसमें हाउ इंडिया डिड दैट मार्स मिशन पूरी स्टोरी है. आप में से किसी ने देखा है उस मूवी को? हेलो स्टूडेंट्स, कोई है स्टूडेंट जो सुन रहा है? I have. Sir, actually, they are dropping message in chat box. Okay. No, I preferably मैं ज़्यादा prefer करूँगा आप लोग you open up your microphone, speak up. ठीक है, तो ज़्यादा better होगा. तो या निहारिका, आपने मूवी देखी है, करेक्ट? यस सर. ओके, सो इस बार अगर आप लोग वापस से उस मूवी को देखना, एंड में जाके आप इन मैम को वहां पे देखोगे. इनका नाम है मीनल रोहित, एंड शी वाज द की फीमेल साइंटिस्ट जिन्होंने मीथेन सेंसर डेवलप किया था
मंगलयान मिशन के लिए, एंड उसी सेंसर की वजह से वी केम टू नो कि मार्स पे लाइफ है कि नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ, एंड ये जो बच्चे आप स्कूल के देख रहे हो, दे आर फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ उत्तर प्रदेश, और ऐसे बच्चों को हम लोग रूरल एरियाज में जाके इस तरीके का एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सिमिलरली हम ये काम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज के साथ भी कर रहे हैं। So I'm just giving you an idea, brief idea, that what type of work I'm involved in, and right from the basic government school to IITs of the country I'm involved with, and कई सारी opportunities youth को हम लोग provide करते हैं. So that's why I have seen how this strategy of innovation is highly dependent on design thinking. तो ये जो session है, मैं थोड़ा सा इसको अपने पर्सपेक्टिव से आप लोगों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे डिजाइन थिंकिंग और इनोवेशन को कनेक्ट किया जा सकता है, राइट। सो आई वांट कि आप लोग फुली पार्टिसिपेट करें, एंड सभी लोग जितने भी हैं, आई अंडरस्टैंड इसको आप एक क्लास सेशन की तरह समझ रहे होंगे, बट दिस कैन गिव यू अ वेरी ग्रेट insight toward whatever you are pursuing right now as an academic course. Okay, तो let's begin. तो आज के सेशन में राइट, तो आज का जो सेशन है उसके ये 4 पिलर्स हैं पूरे सेशन के, जो बेसिक हाईलाइट वी विल स्टडी टुडे. सो नंबर 1 वी हैव द what is design thinking. So we will understand this design thinking, the core idea behind it, and then number 2 we will go ahead and we will try to understand how design thinking is used by ISRO, because of course I belong to space community of the country. So मैं ऐसे ही केस स्टडी लेके आप लोगों को बताऊंगा जो मैं जिसमें मैंने खुद काम किया हो. तो इसरो ज्यादातर लोग जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो इसरो को लेके हम लोग एक केस स्टडी हल्की सी समझेंगे कि उन्होंने कैसे डिजाइन थिंकिंग को यूज किया, एंड आज वन ऑफ द बेस्ट स्पेस कंपनीज ऑन द प्लैनेट बन पाए वो. Thirdly, we will go ahead and we will understand the key components of design thinking, and finally हम लोग एक फेज होता है डिजाइन थिंकिंग का, आप नॉर्मली गूगल भी करेंगे तो ये 5 फेज आएंगे, तो उन 5 फेज को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू आउट द सेशन. सो टिल दिस पॉइंट am I clear to all of you कि हम क्या सेशन के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं? मैं चाहता हूँ सारे पार्टिसिपेंट एटलीस्ट एक बार माइक्रोफोन ओपन करके यस बोले. That I want to understand, so that ये एक typical session ना हो. Yes, sir. Okay, great. Yes, sir. Absolutely, thank you very much. तो सभी लोग जो इसे अटेंड कर रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन, बिकॉज हम थोड़ा सा यूनिक हटके आज सेशन करेंगे. हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम के थ्रू कुछ अप्रोच करेंगे कि डिजाइनिंग थिंकिंग कैसे काम कर रही है कंट्री के लिए, राइट. So let me just go ahead and tell you what is design thinking. तो उससे पहले I want you people to tell me, कोई भी एक बच्चा हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सॉरी आई डोंट नो, तो हिंदी या इंग्लिश में कोई भी एक्सप्लेन करना चाहेगा कि डिजाइन थिंकिंग होती क्या है. लाइक दो सिंपल से वर्ड है, डिजाइन एंड थिंकिंग, राइट. तो इससे बेसिक आइडिया कुछ आपकी तरफ जा रहा होगा. सो कैन एनीबॉडी टेल मी कि क्या है डिजाइन थिंकिंग? अपनी अप्रोच आप मुझे बता सकते हैं? यस प्लीज बताओ, कोशिश करो, नो इश्यूज. हिंदी इंग्लिश चूज करके आप किसी भी लैंग्वेज में बताइए. कोई मार्क्स नहीं कटेंगे इस चीज के, ऑब्वियसली ये टेस्ट तो हो नहीं रहा है, गलत जवाब देंगे. बेसिक सा आइडिया डिजाइन एंड थिंकिंग, दो ऐसे वर्ड हैं जो बचपन से सुनते आ रहे हो, राइट. तो थोड़ा कुछ तो आप बता सकते हो. यू आर डूइंग अ ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम. चलो यस, कौन बताएगा? एनीबॉडी? 22 लोग हैं हमारे पास, जिसमें से आई बिलीव 14 to 15 है. ओके, तो गुरविंदर मान, कैन यू हियर मी? Kevin Richard,
एनीबॉडी? इतनी बोरिंग ऑडियंस कैसे आज मेरे पास में? अपूर्वा मैम, कैन यू जस्ट क्लैरिफाई, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? एम आई ऑडिबल? Am I audible, sir? Yes, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मिंग. तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं पहुंच रहा है? इट्स रियली सिंपल ना. डिजाइन एंड थिंकिंग कुछ तो निकल रहा होगा. हमें बहुत साल लगे चिंपैंजी से इंसान बनने में. तो हमारे पास अभी इस समय पे एक सबसे अच्छी जो पावर है ह्यूमैनिटी की, वो यही है कि अगर हमें कोई वर्ड दिया जा रहा है तो वी जनरेट आइडियाज ऑन दैट. तो आई कांट बिलीव कि ऑफ कोर्स आपके दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा. फॉरगेट इट कि कोई भी जो भी जिस भी चीज की वजह से आप बैक आउट हो अभी, लेकिन बताओ एटलीस्ट मुझे डिजाइन थिंकिंग सुन के क्या दिमाग में आ रहा है, लाइक व्हाट इट इज, आपका पर्सपेक्टिव क्या है एज अ स्टूडेंट? यस, स्पीक अप. कोई तो एक स्टूडेंट होगा. आई बिलीव वी हैव 2 डजन पीपल. एनीबॉडी? चलो ठीक है. ओके, सो मैं प्रोसीड कर रहा हूं, बट थोड़ा सा टोन हमें और बेटर करना पड़ेगा कम्युनिकेशन का. वी हैव टू लेवल अप द टोन, बिकॉज़ आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन कि आई कम एंड आई जस्ट स्पीक आउट एंड गो. आई रियली वांट टू इन्वॉल्व माय ऑडियंस एज वेल. So you people have to understand this. Let me go next for the, yes, okay. So if you ask me as a person from the industry and also parallelly working in the academic area, कि what exactly is design thinking? So design thinking को एक simple mantra में convert किया जा सकता है, which says revolve till your product evolve. Okay, so revolve till your product evolve means that you need to understand a simple logic. Every product that you develop, every solution that you offer to the world, it can become better, and the process of making it better is called design thinking. Simple. Okay, so you think about improving the design of the current existing product. It can be a simple plastic water bottle, it can be a rocket ship. Okay, so when I say product, वो कुछ भी हो सकता है. So you just go ahead and you talk about how you can evolve the product, how you can make it more better, more efficient and more suitable for customer use. इस simple technique को design thinking कहते हैं. There are lot of students, lot of people earning millions of dollars, who are running the company, जो आपको कंसल्ट करेंगे that how you can make your product more efficient. Okay, so you can be a good learner of this particular area and you can get a great career ahead अगर आपको डिजाइन थिंकिंग प्रॉपर तरीके से अगर आपको करनी आ गई वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए. बट ये सिंपल मंत्रा है that you need to understand. Revolve till your product evolve. Now putting this into a perspective, मैं आप लोगों को let me talk about the case study of ISRO. So Indian Space Research Organization, I hope you all must be knowing about ISRO. So those who don't, Indian Space Research Organization is the only government body of the country which creates rockets and satellites, and thanks to those satellites who are orbiting around the planet Earth and other celestial objects, आप लोग की total CSIT industry depend कर रही है. Even this entire talk which I am giving is possible because one satellite is up there which is providing the internet connectivity. Okay, you are able to use your global positioning system जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो. आपके Amazon, Zomato, इनकी deliveries आपके घर पहुंच रही हैं because there is a huge network of satellite which is supporting that framework. So that's why I don't just think कि ISRO is present in South India. They are rocket launch और Mars और Moon तक जा रहे हैं. But you get this idea that डिजाइन थिंकिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल ISRO से
बेटर कुछ नहीं हो सकता है. Why? Because you must be knowing, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा तो ISRO's initial journey started on bicycle. Okay, even this image that you can see on my screen is that journey. So here you have one of them is Abdul Kalam sir, and basically this is 1963 when ISRO carried their components on bicycle. And now in 2022 we have the most fantastic rockets on the planet which can take us to moon and Mars. So design thinking के through कैसे innovation किया जाता है, अगर उसको अगर वाकई में समझाना है तो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट गूगल उनसे बेटर एग्जांपल मुझे लगता है कि इसरो के थ्रू वी कैन मेक यू अंडरस्टैंड. राइट, now moving on next page. So here is the example that I wanted to provide you. यहाँ पर all the way from 1980 to 2017 तक, you know, roughly 40 years of cycle, time cycle है हमारे पास, where ISRO evolved their rockets. So in 1980 they had SLV3. Of course आप सभी लोगों ने, you must have heard about Abdul Kalam sir, how he created. So Abdul Kalam sir only created this first rocket, SLV3, satellite launch vehicle. Guys, if you can read, just can you read what is the height of this rocket SLV3? According to this slide, what is the height? कितना height दिया हुआ है? Anybody? Open करो microphone. लिखा हुआ है. I'm giving you a cheating opportunity. I'm showing you. So what is the height for SLV3 according to this slide? कितना height है? कितना मीटर है? Students, anybody? Manpreet Kaur, Navjot Kaur, Niharika, Preetpal Singh, Rajvinder Kaur, so many people are there. Hello. Okay. 22.7 meters. Yes, thank you, Niharika. So, and what is the height of the final rocket? This GSLV Mach 3. इसका कितना है? It's somebody else. Niharika के other than Niharika, like a lot of people are there, right? Okay, so it's around 43.43, means 44 meter है, right? So if you just understand the comparison, हमारा एक फ्लोर जो है approximately 3 meters का होता है, ठीक है? One floor of a house or an apartment is around 3 meters. So in 22, roughly 22 meters में we are going about 7 floors. Okay? यानी एक 7-story rocket, 7-floor rocket, आप imagine करो 7 floor की बिल्डिंग कितनी बड़ी होती है? 244 meters. So that roughly goes for 15 floor. तो 15 floor की बिल्डिंग जितना बड़ा रॉकेट बनाया है इन्होंने. Okay, so that's why इसरो को इतना बड़े लेवल पे क्रेडिट दिया जाता है चीजों का, because of the lack of resources. You know, they started in 1980 when the entire India was under deep poverty, deep corruption, and like lot of other challenges, and few people decided that India need their own space program, and they started with purchasing some components from USA. Then they innovated it and they created their own indigenous rocket called SLV3 in 1980, which was around 7-story building.
एंड वो ओनली 40 किलोग्राम्स को लेके जा सकता था ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में सिर्फ वो 40 किलोग्राम्स को लेके जा सकता था, विच इज अ वेरी लाइक नॉर्मल वेट होता है एक बच्चे का, साथ मतलब 7th 8th या 10th में पढ़े स्कूल वेट के बच्चे का एक वेट होता है, उस वेट के बच्चे को उतने वेट को वो ले जा सकते हैं। देन दे क्रिएटेड द सेकंड वर्जन, उसको चेंज किया, इनोवेट किया। In the same rocket they attached two different boosters, साइड में आपको देख रहा है चेंज, यहाँ साइड में 2 बूस्टर्स और लगा दिए गए हैं, 2 छोटे रॉकेट्स और लगा दिए गए हैं। So now it increased in some height and also they increased their mass into 150 kilogram। मतलब पहले रॉकेट के साथ they were only taking 40 kilograms in space, then they are taking 150 kilograms in space। Okay, then they created this workhorse of ISRO 1993 mein, right? They created this PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle, and with this rocket only India did their first moon mission, their first Mars mission, and their world record 104 satellite launch. This is the rocket behind that, Polar Satellite Launch Vehicle. So this rocket had a height of around 44 meters, ये अभी तक functional है, and it can take up to 1860 किलोग्राम। रफली मैं अगर बताऊं तो पहला जो रॉकेट था वो एक बच्चे का वजन लेके जा रहा था 40 किलोग्राम का, एंड ये रॉकेट ऑलमोस्ट 2 एलिफेंट्स को वेट को, 2 बड़े हाथी जो होते हैं यू नो बिग साइज एलिफेंट्स, उनको ये ले जा सकता था स्पेस में। सो दिस इज द टाइप ऑफ इवोल्यूशन दे हैड बिकॉज ऑफ डिजाइन थिंकिंग। एंड देन उन्होंने सोचा कि रॉकेट सैटेलाइट्स को और बड़े ऑर्बिट्स में ले जाना है हमें। सो पहले वो 750 किलोमीटर या फिर 700 किलोमीटर तक ले जा रहे थे, बट नाउ दे डिसाइडेड कि हमें ऐसे रॉकेट्स, इंडिया should have those type of rockets which can take the satellites to even farther in range, let's say 36,000 kilometers. So then they decided to design these GSLV series. So GSLV Mach 2 made in 2001 was around 50 meters, 49 meters, and it was taking 2200 kilograms of weight into geosynchronous orbit, means 36,000 kilometers दूर ये ले जाता था। And finally, I hope you must be knowing, India is about to do a astronaut mission called गगनयान। तो इंडिया खुद का अपना गगनयान मिशन करने वाला है नेक्स्ट ईयर, और इंडिया already did that Chandrayaan 2. Of course, some of you can call it failure, but a country like India attempting to land on moon is something. So this is the responsible rocket. So right from 1980 to 2017, the design shift, you can see the design shift, and also you can see the requirement based evolution of these rockets. तो शुरू में इंडिया को छोटे सैटेलाइट भेजने थे, आज की डेट में हमें बड़े सैटेलाइट्स भेजने हैं। So depending on that, हमने पिछले 40 से 50 सालों में इस टाइप का इवोल्यूशन किया, and it is all because of design thinking. अच्छा, now you can say कि sir, okay, so 2017 में we created this monster, okay, GSLV Mach 3. Now some of you can see कि sir, now in 2022 हम और बड़े रॉकेट्स बनाएंगे, करेक्ट? बट इसरो ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया इस चीज को, उन्होंने मार्केट को समझा, दे अंडरस्टूड द मार्केट एंड दे had done an analysis कि a lot of institutes like CTU and other type of universities and colleges want to send their own satellites, but वो सैटेलाइट्स हजार किलोग्राम के नहीं है, वो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, 10 किलोग्राम के, 2 किलोग्राम के, और उनको इन रॉकेट्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। So what they did is they used the design thinking and they innovated a different rocket which was small satellite launch vehicle. अभी last year August month में SSLV had its maiden flight, and इसको डिजाइन करने के पीछे here are the future. Number one,
इस रॉकेट को 72 आवर्स में यानी कि 3 दिनों में ऑर्डर करने के बाद बना के स्पेस में लॉन्च किया जा सकता है। यू अंडरस्टैंड कि 3 दिनों में अमेज़न का पार्सल नहीं पहुंचता है फ्रॉम लाइक केरला टू दिल्ली और पंजाब, and we are talking about 72 hours के अंदर we will make a entire rocket and we will shoot it to the space. Okay, second, इस रॉकेट को बनाने का जो कॉस्ट है इट जस्ट 30 करोड़ रुपीस, एंड प्रीवियसली इसी रेंज के रॉकेट्स जो यूएस एंड यूरोप बना रहा है दे आर मेकिंग इट इन मोर देन 120 करोड़ रुपीस, 150 करोड़ रुपीस. ओके, एंड देन आफ्टर दैट हम कई सारी सैटेलाइट्स को जल्दी जल्दी भेज सकते हैं. So what ISRO did, ISRO understood a demand in the market and accordingly they created their product, and this is so successful कि इनको already more than 500 small satellites को launch करने का contract they already have, ISRO already have. Okay, so you understand कि जरूरी नहीं being a biggest player in the space industry वो बड़े और better rockets ही बनाते. They understood the market and they shifted to smaller rockets. Okay, so this is the beauty of design thinking. Design thinking depends on how your customer demands, what they think, what their needs are. उनको समझ के you create a product. Then after that, if you move ahead, you will find there are basic 3 components of the design thinking process. Number 1, you have to understand. For example, there are some customer वो बोलते हैं कि what if हमें एक ऐसा device हो कि okay, so they want to integrate. So for example, they are telling कि बहुत okay. So how many of you know about Elon Musk? Elon Musk run a space company called SpaceX. How many of you are aware about it? Elon Musk पता होगा, right? So how many of you know he runs a space company called SpaceX? At least yes drop कर सकते हो आप लोग chat box में. Okay, great. CRC. Okay, fine. So Elon Musk wants to give the world a internet जो हर जगह काम करे. Okay, so currently you understand even in villages you cannot use internet properly, and there are certain regions on the planet like Himalaya का region है या फिर Sahara desert है, in Africa, और बहुत सारे ऐसे regions हैं worldwide जहां पर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है. रीजन क्योंकि इंटरनेट अभी तक सी रूट के रास्ते आ रहा है, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स. ओके, एंड जहां पर ये कनेक्टिविटी नहीं होती है वहां पर इंटरनेट नहीं आ सकता है. But Elon Musk being a very a good design disruptor, I should say, so he thought why we are carrying the internet through wire cables, why we can't make such satellites जो कि इंटरनेट दे सके. And here the idea of satellite internet took birth. There is a company, I'm naming that company in the chat box, Starlink. Okay, थोड़े भी जो आप लोग अपडेट होंगे उन्हें पता होगा. So Starlink company is basically Elon Musk created, and under this company they are going to shoot 46,000 satellites in space. Just to give you a comparison, ह्यूमन हिस्ट्री ने आज तक 1957 से लेके 2022 तक सिर्फ 8,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है. एंड एलॉन मस्क वांट्स 46,000 सैटेलाइट्स इन नेक्स्ट 10 years अंडर दिस स्टारलिंक प्रोजेक्ट. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटी है कि नहीं है. एलॉन मस्क ये इसलिए कर पा रहा है बिकॉज उसके पास खुद के अपने रीयूजेबल रॉकेट्स हैं. वो बहुत सस्ते में चीजों को स्पेस में भेज पाता है. ये चीज कोई और कंट्री या कोई और कंपनी नहीं कर पाएगी इतनी इफेक्टिवली. ओके, सो सबसे पहली चीज ये होती है कि कोई भी डिमांड आ रही है मार्केट में तो टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटी उसके लिए जनरेट करना बहुत जरूरी है. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द अवतार मूवी? अभी रिसेंटली एक मूवी का सेकंड पार्ट आया है, अवतार 2, राइट? एनीबॉडी हैव सीन इट, द अवतार मूवी? यस,
Okay, so if you have seen it, तो आप लोग connect कर पाओगे इस बात को. If you know about Avatar movie, the first part, Avatar 1 1992 में ही ready हो चुका था. Okay, the script and everything was done, but because उस समय उस मूवी को जिस फ्रेमवर्क में शूट करना था, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल थी, ऐसे कैमरास अवेलेबल नहीं थे जो उस तरीके के वर्चुअल सेगमेंट को शूट कर पाए. इसलिए दे वेटेड फॉर एन एंटायर डिकेड. वो लगभग 10 से 15 साल रुके सो दैट द टेक्नोलॉजी कम्स इन. कोई चैलेंज नहीं था because technology was missing, so that's why they waited till the technology comes into the market. So that's why the first point is you need to understand this technological possibility हमारे पास में बहुत जरूरी है होना. Then जब technologically हमें लगता है we can do it, then we go ahead and we plan out the business स्ट्रैटेजी कि इसको हम फंड कैसे करेंगे. ओके, उस आइडिया को किस तरीके से हम लोग मोनेटाइज कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. एंड देन थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है व्हाइल डूइंग ऑल दिस, आखिरी में खरीदता तो कस्टमर है. ओके, वॉट एवर यू मेक द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑन द प्लैनेट, बट अगर नोबडी शो अप इन द थिएटर्स, इट विल बी अ फ्लॉप शो. Okay, similarly you create the most advanced technology, but अगर वो काम नहीं कर रहा है, so अगर users satisfied नहीं है उस tech से, तो वो technology किसी भी तरीके से grow नहीं कर सकती. So third and very important thing is user needs. So you need to develop those, your product according to the user need, but also technological and business sustainability भी होना चाहिए उसके अंदर. तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं डिजाइनिंग थिंकिंग के. सो नाउ एट दिस मोमेंट हम ऑलमोस्ट अपना 60% वेबिनार डन कर चुके हैं, 70% आई शुड से. सो आई वांट यू पीपल टू जस्ट ड्रॉप चैट बॉक्स में आप यस या नो या कुछ भी ऐसा सिग्नल डालो जिससे आई अंडरस्टैंड यू आर विद मी एंड यू पीपल अंडरस्टूड सो फार. Okay, so far I believe clear raha hai, like you people understood what I'm trying to push. Okay, good, fine. Now moving ahead, let's talk about the very important thing in the entire presentation, which is the 5 phases of design thinking. इसको बड़ा बोरिंग तरीके से मैनेजमेंट क्लासेस में पढ़ाया जाता है, एंड लाइक आई रियली वांट टू स्पाइस इट अप सो दैट you people get involved. तो जो 4 लोग मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, which involves Niharika, somebody named CRC, Kevin, Richard, and yes, these 3 people, if you are listening, let's engage a bit. Can you just open up your microphone for a while? I have something in which we can get involved so that other people can also learn. Niharika, can you open up your microphone? Yes, sir. Great. CRC. Great. Kevin. Kevin, can you unmute yourself for a while? Yes, sir. Okay, great. So now, before we begin to this, 5 phases of design, let's do something, interesting. Okay, so have you ever tried to create a problem? Okay, so design thinking is highly connected, with solving a problem or creating a product. But as you guys know, creating a product means solving a problem. तो सबसे पहले हम लोग एक प्रॉब्लम को क्रिएट एंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. So you people must be in your
like 16 to 22 years old के bracket में होगे आप लोग, I'm sure. So you spend a good amount of time on planet Earth. Okay. So you tell me कि अभी let's say कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर के लिए स्टार्टअप आइडिया आपके दिमाग में है या कुछ ऐसा जो आप लाइक जिसके अबाउट एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. कोई एक प्रॉब्लम को पिक करते हैं. ओके, तो कोई एक प्रॉब्लम बता सकते हो which that you want to solve in this society or maybe something. कोई एक चैलेंज बताओ जो आपसे निकला हो. मैं नहीं चाहता कि मैं कोई प्रॉब्लम बताऊं, मुझे एक प्रॉब्लम बताओ जिसे मिलके सॉल्व करते हैं. एंड देन वी विल अप्लाई दिस 5 फेज ऑफ डिजाइनिंग थिंकिंग इन द प्रोसेस. चलो, निहारिका, सीआरसी एंड कैविन, एनी प्रॉब्लम और एनी प्रोडक्ट यू वांट टू मेक, कुछ ऐसा. और एनीबडी एल्स जो कि कोई स्टार्टअप प्लान कर रहा है या फिर कुछ ऐसा जो वो सॉल्व करना चाहता है. बिकॉज until and unless हम रियल प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेंगे, हाउ वी कैन जस्टिफाई आवर एजुकेशन. डिग्री जस्ट पीस ऑफ पेपर है अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो आप. एनी आइडियाज? किसी के पास कोई ऐसा प्रॉब्लम दैट वी कैन वर्क ऑन? इंडिया इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स ना. बिलियन लोग हैं, ट्रिलियन प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे. बट आपके दिमाग तक नहीं पहुंच रहा है. So, Kevin, can you suggest any issue or any problem or anything which we can solve out? Like let's say okay, बड़ा noble cause उठाते हैं. How many of you believe that hunger, जो भूखमरी जिसे कहते हैं, should be wiped out from planet Earth? किसी भी बच्चे की या किसी भी पर्सन की मौत हंगर की वजह से नहीं होना चाहिए. कितने लोग को मतलब ये मानते हैं कि यस दिस इज अ चैलेंज जिसको सॉल्व करना चाहिए. ह्यूमन, आप लोग ये स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज, करेक्ट? सो ह्यूमैनिटी 101, कैन यू बिलीव सो कि हंगर को हमें खत्म करना चाहिए, किसी भी इंसान की मौत नहीं होनी चाहिए? Yes, sir, sure. Right. And CRC, what about you? You believe कि हंगर की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए प्लैनेट अर्थ पे? What about other people? How many of you think that hunger should go from planet Earth? Just say yes or no. Yes, sir. Right? Okay. So now we have a problem that we together as an institution or maybe as a company, okay, now we are co-founders of a company which want to solve which problem? We want to wipe out hunger from planet Earth. Okay, so just be with me. Now we have a problem कि हमें hunger solve करना है. Now let's go to the number one technique of the process, empathize. Okay, so empathize with user. Abhi, why you have choose this project? Why you have chosen this particular problem? Because we know, we have seen जब hunger word आता है तो बहुत सारे इमेजेस हमारे दिमाग में आने लगते हैं. अफ्रीका के किसी भूखे बच्चे की फोटो आती है या फिर इंडिया के किसी ऐसे गांव की तस्वीर निकल के आती है जहां पर बहुत ही ज्यादा स्टारवेशन है, बहुत स्किनी बच्चे हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जिनको प्रॉपर फूड सप्लाईज नहीं मिल रही हैं. सो उन लोगों का इमेज दिमाग में आता है. सो दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड एम्पैथी. सो वी आर फीलिंग समथिंग फॉर द पीपल जिनको वो सॉल्यूशन चाहिए. तो ये जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा तब तक हम कभी भी किसी भी टाइप के इनोवेशन या किसी भी टाइप के डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के लिए तैयार ही नहीं हो सकते. Don't connect with the problem unless we don't want to solve that problem. We cannot make any development in the process. Okay, got it? ये clear है?
जब मैंने हंगर वाइप आउट करने Hello, guys, can you hear me? Niharika, CRC, and Kevin, Yes, guys. sir. Yes, okay. So step number one, I believe clear है आप लोगों को. Unless we won't connect with the problem, unless we don't generate empathy for the users, we cannot proceed further. Okay. So this is number one. तो हमें जो hunger है उस problem को लेके हमें एक empathy generate होना जरूरी है. Second step is defining. So exactly वो hunger का issue कहाँ है? न्यूयॉर्क में नहीं है. ओके वो अफ्रीका में है, वो इंडिया के उन एरियाज में है जहां इकोनॉमिक ग्रोथ कम है. पंजाब में हंगर कम है एज कंपेयर टू बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसी जगहों पर. ओके सो वी हैव टू डिफाइन द पैरामीटर्स कि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम है कहां और किन लोगों को है. देन कम्स द थर्ड प्रोसेस where we ideate the strategy. अब इसको सॉल्व कैसे करें? ओके सो किसी ने बोला कि वी कैन डू वन थिंग कि हम कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि रात का खाना फेंक देते हैं, या फिर जो शादियों में जाते हैं और वहां बहुत सारा खाना बचता है, उस खाने को उठा के हम लोग वैन्स के थ्रू नीडी पीपल तक ले जा सकते हैं. ओके सो ये एक आइडिया जनरेट हुआ कि हाँ इन तरीकों से वी कैन कलेक्ट फूड जो वेस्ट हो सकता था, डंप हो सकता था, और उसको कई लोगों के माउथ तक पहुंचाया हमने फॉर फीडिंग पर्पस. सो दिस इज द आइडिएशन वेयर यू आर थिंकिंग इनसाइड द ऑफिस विद योर पीपल. ओके देन कम्स द real world phase which is the prototype phase, where you will have a small technique that के इक्विपमेंट्स की जरूरत हो तो आप उन इक्विपमेंट्स को इस नंबर 4 स्टेज में बनाते हो. दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग. ओके हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड अ 3D प्रिंटर? कितने लोगों ने 3D प्रिंटर यूज किया है? एनीबॉडी? अगर नहीं किया है तो से नो. अगर नहीं किया है से नो. ओके सो I have been to CTU. वहां पर there is a you know I believe on second floor, correct me if I'm wrong, वहां पर there is a place student innovation take place. वहां पर 3D printer रखा हुआ है. I request the authorities की at least आप में से जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो जाके वहां देखो. You have 3D printers जो हेल्प करता है प्रोटोटाइपिंग के लिए. आपकी खुद की यूनिवर्सिटी में सेकेंड फ्लोर पे है I believe. So prototyping is a really important element और इस पूरे साइकिल का, जहां पर you are whatever you have in your head, whatever idea you had, you are trying to practicalize it. Okay, and then finally you have the fifth and the last piece of puzzle which is really important and highly independent कि आपका आइडिया कितना अच्छा है, आपने कितना अच्छा प्रोटोटाइप बनाया है, आपने अपने कितने साल लगाए हैं, कितना रिसर्च किया है, वो सब का सब कुछ ज्यादा रोल नहीं रखेगा इफ जब आपने टेस्ट किया, मार्केट किया. People don't wanted that. Okay, and
This is where design thinking take place. जब आपने कलेक्ट एक आइडिया से, एक प्रॉब्लम से कनेक्ट किया, उसको डिफाइन किया एक टिपिकल ऑडियंस के लिए, देन यू आइडिएटेड इट इनटू सम फिजिबल मॉडल, आपने उसका प्रोटोटाइप बनाया एंड उसको लेके आप मार्केट में गए, पर मार्केट स्लैप्ड यू, मार्केट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया. व्हाट यू विल डू, देन यू अंडरस्टूड कि कस्टमर को ये नहीं चाहिए या इस फॉर्म में नहीं चाहिए, देन आप उसको रिफॉर्म करते हो, उसको चेंज करते हो, एंड देन फाइनली यू क्रिएट अ बेटर प्रोजेक्ट व्हिच इज मोर अडेप्टेबल बाय द ऑडियंस, एंड हेंस यू क्रिएट द फाइनल प्रोडक्ट विद इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग. तो ये हमारे पास में टोटल जो फेज थे 5, दैट आई समड अप, एंड जस्ट एक एग्जांपल था हंगर को सॉल्व करना. अगर उसी के बारे में आज आप इस सेशन के बाद सोचो तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे. सो विद दैट आई वांट टू क्लोज माय सेशन, एंड इन द एंड just one quote I want to share with you all: to do the impossible you must see the invisible. All the great things in the world that you see, it was all first considered impossible, and then somebody, some visionary saw that and make it happen, और वो miracles कर रहा है आज की डेट में. Okay, so with that I want to thank you CTU staff जिन्होंने ये सेशन किया. I hope भले 3 से 4 बच्चे इन्वॉल्व रहे, बट जो लोग पैसिव मोड पे भी थे, just listening to the entire session, उनको कुछ सीखने को मिला होगा. Thank you everybody. So Apurva ji, I'm done from my end. Thank you, sir, for sparing such valuable time for our students. And overall session is very informative. And thank you, IT sir. I request you to please share the word of appreciation for sir. Sir, this is a small token of love from City University. Thank you. Thank you so much, sir. Just one small suggestion to the concerned authority. Yes, sir. इसमें से कुछ बच्चों को आप प्लीज जो 3D प्रिंटिंग एरिया है आपका, when I visited last time, वहां पर जाके दिखाएं, because ये जो पूरा प्रोसेस है it's incomplete without prototyping. So at least if you can just go ahead, because इन्होंने देखा नहीं है what they said in the chat box. तो अगर at least वो प्रोसेस होते हुए देखते हैं, so they can totally connect with what I was explaining these people. Sure, sir. Thank you, ma'am. Thank you, students. जिन्होंने interact किया उनका भी, जिन्होंने नहीं किया, but please सेशंस और इंटरेस्टिंग हो सकते हैं. एक स्मॉल एडवाइस है, अगर आप लोग कम्युनिकेट करना और इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दो. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. Thank you so much, sir. Thank you, sir.